So here comes the next question for 4 marks. Price determination under perfect competition. भाई हम प्राइस को डिटरमाइन कैसे करते हैं? आपने पढ़ा था चैप्टर 3A डिमांड, आपने पढ़ा चैप्टर 3B इलास्टिसिटी। डिमांड और इलास्टिसिटी को जब हम साथ में पढ़ते हैं तो हम लोग डिमांड का पूरा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ लेंगे। आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। नाउ 3A और 4 डिमांड और सप्लाई को जब हम जोड़ देते हैं तो वहां पे हम वो दोनों के पैरामीटर को कंसीडर करते हुए प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द प्राइस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस इज कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट? So what is equilibrium? Equilibrium is a situation where demand is equal to supply. Equilibrium price is that price when quantity demanded is equal to quantity supplied. So if you remember, हमने टेबल बनाया था चैप्टर 3A चैप्टर 4 में, जहां पे हम प्राइस डिमांड बताते थे, प्राइस और सप्लाई बताते थे। अब हम उनको जोड़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू क्लब दैट। सो एज यू कैन सी, प्राइस है, डिमांड है, सप्लाई है, और उस टाइम पे डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप क्या है। So you can see in the first scenario, demand is more than supply. So can I say there is excess of demand? In the next scenario, the same one, but there is a point where you can see demand is equal to supply. वो time पे price कितना है? 300. That 300 is called as the equilibrium price. इसे क्या कहते हैं? ये जो 300 है students, इसे कहते हैं equilibrium price. ये जो 3000 है, इसे कहते हैं equilibrium quantity. And this situation is called as a equilibrium point. When you see the further 2 points students, ये वैसे points है जहां पे यहाँ excess of demand था, last 2 scenario में excess of supply है। When we draw it graphically, the equilibrium curve, जहां पे हम demand और supply दोनों की help लेंगे, और यही टेबल को जब हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, so can I say it seems somewhat like a scissor? आप देख सकते हो, demand is a downward sloping curve, supply is an upward sloping curve. They both intersect at a point and that point is called as a equilibrium point, right students? Can you all see? Price equilibrium 300, equilibrium quantity 3000, quantity demanded भी है, supplied भी है, चारों arrow marks towards the equilibrium बताने. That's how you determine the price. So how do you explain this diagram? The curve, demand curve is a downward sloping curve, supply is an upward sloping curve. They both intersect at a point and that intersection point is called as an equilibrium point. That 300 price is called as an equilibrium price and that 3000 quantity is called as an equilibrium quantity. 4 mark question, Alfred Marshall ने comparison किया था इसका. Demand and supply are two blades of the same scissor. Just like cutting of cloth, we require both the blades. इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट, उसने बोला भाई अगर इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करना है तो ये दोनों ब्लेड्स की तरह, और दोनों भी ब्लेड्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अकेला डिमांड कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला सप्लाई कुछ नहीं कर पाएगा, एंड देयरफॉर दे आर टू ब्लेड्स ऑफ द सेम सिजर. दैट्स व्हाट अल्फ्रेड मार्शल कंक्लूडेड. आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स. कम ऑन, देन वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. थैंक यू.